Okay, so today we will be discussing on the UGC NET JRF first unit, business management and managerial economics. Okay, so Okay, ma'am. now, yeah, we would be focusing today's class. We would be focusing on the objectives of business firm, then demand analysis. We would be focusing on law of demand, elasticity of demand and its measurement, forecasting, demand forecasting, and relationship between AR and MR. Okay, so these are the important uh, topics that we are going to cover today. Very, very important. And after that, we will be having around some MCQs on general management. Okay. Okay. So let's start from with objectives of business firms. It's a bit theoretical. So the first objective is profit maximization. Last class, who had attended the way I had taught you the profit maximization model? Who of you had attended the profit? I was there, ma'am. Okay. Mama, I So was also there. okay, good, Akanksha. So based on this profit maximization model, the first objective of business firm is profit maximization. So the rules for profit maximization are MC equals to MR, marginal cost is equal to marginal revenue, and marginal cost should cut marginal revenue from below. So these are the two rules for profit maximization. Now, whenever we calculate profit, profit is equal to total revenue minus total profit, total cost, sorry. So whenever we are talking about business firm objective, पहला objective हमारा है profit maximization. So profit maximization तो theoretically है, without profit the business cannot exist. It is very difficult to sustain in the life run in the long run of the business. लेकिन अगर हम pure economics concept में देखें तो दो rules के वजह से हमारा profit maximization होता है. कौन सा दो रूल है? एक होगा मार्जिनल कॉस्ट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड दूसरा होगा अगर ये दोनों कंडीशंस दिए हैं, राइट, टू कंडीशंस डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, marginal cost should cut marginal revenue from below. So depending upon whichever situation we are into, हमारा ये दो rules काम करेगा. But these are the rules for profit maximization. Okay, now let's move to the second objective. Now what is second objective? Second objective है हमारा shareholders. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? In 1932, Burley and Means suggested that managers have different goals from shareholders. Now, who are shareholders? Those people who are having shares in the company. Now, who are stakeholders? Any XYZ person who is getting some vested interest from the company is known as a stakeholder. So they are not interested only in profit maximization. So Burley and Means के हिसाब से बहुत से जगह पे managers का बहुत different goals हैं. They are not interested in profit maximization. Rather, they are more interested in they are more sustained, or they are more inclined towards the interests of the shareholders. क्यों shareholders के ऊपर इतना influence क्यों है? Because shareholders cannot have much influence on managers. उनके ऊपर इतना ज्यादा influence नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? Because they do not possess adequate information about companies. Okay, so that is the reason majority of shareholders cannot attend meetings. So basically अगर हम देखें, apart from profit maximization, what are the other objectives? Other objectives are sales maximization, output maximization. Just a second, guys. Output maximization, utility maximization, satisfaction maximization, and growth maximization. Okay. Apart from profit maximization, these are the other these are the other objectives that the organization has. Okay. We will handle each one individually now.
So we will start first with Simon's satisfying objective. Now we are talking about objectives of business firm. So who is Simon? He was a Nobel laureate, हर्बर्ट साइमन. वो पहले इकोनॉमिस्ट थे जो बिहेवियरल थ्योरी के ऊपर काम किए थे और हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल थ्योरी. उनके हिसाब से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट्स नहीं है, rather satisfying और satisfactory profits. जब हम एनालाइज कर रहे हैं फर्म का बिहेवियर, वहां पे हर्बर्ट साइमन ने क्या किया, उन्होंने कंपेयर किए. क्या क्या चीज कंपेयर किए? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ कंपेयर किए. अकॉर्डिंग टू हिम, अ फर्म लाइक एन इंडिविजुअल has its aspiration level in keeping with its needs, drives and achievement of goals. उनके हिसाब से एक इंडिविजुअल का जैसा नीड, ड्राइव, गोल के लिए अचीवमेंट का जो थर्स्ट है, वो सेम चीज फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है. The firm aspires to achieve a certain minimum or target level of profits. ठीक है, बट उसका एस्पिरेशन लेवल डिफरेंट है based on different factors like production, price, sales, profits, past experience, depends. So इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन को तीन सिचुएशन में हमेशा, और द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस थ्री सिचुएशंस. व्हाट आर द थ्री सिचुएशंस? एक है जो एक्चुअल अचीवमेंट है. ओके, द एक्चुअल अचीवमेंट इज लेस देन द एस्पिरेशन लेवल. एक होगा एक्चुअल अचीवमेंट इज ग्रेटर देन द एस्पिरेशन लेवल, और तीसरा होगा इक्वल. सो तीनों कंडीशन यहाँ पे, एक है लेस, एक है ग्रेटर, एक है इक्वल टू. ओके, नेक्स्ट. इन द फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, जहां पे एक्चुअल अचीवमेंट लेस देन द एस्पिरेशन लेवल है. उस सिचुएशन में क्या था, why it happened? Because it might have happened due to wide fluctuations in economic activity. इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती रहती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलते, इसीलिए ही एक्चुअल अचीवमेंट जो है वो पीछे रह गया जो हम एस्पायर किए थे. एक्चुअल अचीवमेंट किस कंडीशन में ज्यादा जाता है, ग्रेटर देन द एस्पिरेशन लेवल, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज सैटिस्फाइड विद इट्स परफॉर्मेंस. एंड कब वो मैच करते हैं, when the firm does not feel satisfied in the first situation. In that case, they just match with the aspiration level. So depending upon the condition, the achievement level and aspiration level of the organization fluctuates. Okay, so we are talking about Simon's satisfying objective for business organization. Okay, let's move to the second one, behavioral theory of organizational goals. Now what does this theory mean? Seart and March, इन्होंने ये systematic behavioral theory they have propounded it. उनके हिसाब से ownership is separate from management. Okay, so इसी के चलते ही हम organization को is not considered as a single entity with a single goal of profit maximization by the entrepreneur. Okay, here उनके हिसाब से the firm is not considered as a single activity, rather they consider it as a complex organization, जहां पे हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, वेरिएबल्स एनालाइज होती है, एंड दैट अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एक्सपेक्टेशंस एंड चॉइसेस. They look at the firm as an organizational coalition of managers, workers, shareholders, suppliers, customers, and so on. ठीक है, coalition of everything. They look upon that. Next है आपका utility maximization. Utility मतलब क्या है सर? आपका कुछ हम काम करते हैं, utility, you can say satisfaction, a type of satisfaction, time utility. मतलब how much you have done within that specific time, place utility. Okay, so utility maximization is very very important. किसने डेवलप किया? विलियमसन ने डेवलप किया मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एज अगेंस्ट योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन.
This is one of the managerial theories and it is also known as managerial discretion theory. Utility theory को हम otherwise we call it to be managerial discretion theory. Acha. Now let's see what they are trying to say. In large firms, okay, modern firms, shareholders and managers are two separate groups. ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में शेयर होल्डर और मैनेजर दो सेपरेट ग्रुप हैं. क्यों? शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए होती है? हमेशा इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. सो दे फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. बट मैनेजर्स को क्या चाहिए? मैनेजर्स अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका बहुत ज्यादा काम होती है, अलग अलग फंक्शंस दे हैव टू परफॉर्म. Okay, so thus the managers are interested not only in their own growth but also in the size of the staff and expenditure on them. So इसी के चलते ही Williams theory, utility theory, is related to maximization of managers' utility, which is a function of expenditure on staff. Staff के ऊपर हम कितना खर्चा करते हैं, कितना emoluments हम यूज करते हैं, and कितना discretionary funds है. So this is also an objective, sub-objective of your business firm. Okay. To pursue the goal of utility maximization, manager क्या करता है? अपना जो भी resources है, 3 ways में he directs it. पहला क्या है? The manager always desires to expand his staff and increase his salaries. ओके, हमेशा उसके दिमाग में होता है कि मैं कैसे अपने स्टाफ का जो भी साइज है उसको एक्सपैंड करूं एंड सैलरीज भी इंक्रीज करूं. More staff is valued because that will lead to the manager getting more salary, more prestige, more security. इसी के लिए ही he always desires कि उसके नीचे बहुत ज्यादा लोग काम करें. To maximize his utility, the manager indulges in feather bidding. This is very very important. Feather bidding का मतलब क्या है? Petty secretaries, company cars, too many company phones, perks for employees. Okay, इन सब में वो ज्यादा indulge होती है, indulge हो जाते हैं. That is known as feather bidding. So apart from salary, the extra benefits that you get on the job is known as feather bedding. एंड उसी के चलते ही आपका सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं. अगर आपके पास एक प्रिटी सिक्योर सेक्रेटरी दिया जाए, कंपनी का गाड़ी आए, फोन बिल वो देता और पर्क्स, अदर पर्क्स भी वो कंपनी पे करता आपके लिए, तो उसके लिए हिसाब से भी आपको अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं. Such expenditures are characterized as management slack by Williamson. And the third case, जो discretionary funds हैं, ओके, जो मैनेजर के कंट्रोल पे है, फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स टू एडवांस और प्रमोट कंपनी प्रोजेक्ट्स दैट आर क्लोज टू हिज हार्ट्स. Discretionary profit or investments are what remain with the manager after paying taxes and dividends to shareholders in order to retain an effective control of the firm. So these are the 3 ways how a manager directs the firm's resources, okay, in order to pursue the goal of utility maximization. किसी को डाउट है सेकंड ऑब्जेक्टिव में? Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Next is your growth maximization. Another important objective of business firm, growth. Okay. Now, who had given? Robin Maris. उन्होंने दिया था growth maximization का concept. कहाँ पे दिया था? The economic theory of managerial capitalism. 1964 में उन्होंने एक balanced growth maximizing theory develop किया था. ओके, सो वो उनका प्रोपोजिशन क्या था, उनका स्टेटमेंट क्या था कि मॉडर्न बिग फर्म्स आर मैनेज्ड बाय मैनेजर्स एंड द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स हु डिसाइड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. ही बिलीव्ड ऑन दिस स्टेटमेंट. सो जब हम मैनेजर्स का एम देखें, सो दे फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म. ओके, सो द मैनेजर्स focus on the maximization of the growth rate
and the shareholders aim at maximization of the dividends and शेयर प्राइसेस. जितना ज्यादा स्टॉक प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा डिविडेंड उनको मिलेगा, उतना शेयर प्राइसेस का वैल्यू उनको मिलेगा. So, in order to establish a relationship between growth rate and share prices, मैरिस ने क्या किया, उन्होंने एक बैलेंस ग्रोथ मॉडल डेवलप किया जहां पे एक मैनेजर कांस्टेंट ग्रोथ चूज कर सकता है रिलेटेड टू सेल्स, प्रॉफिट्स, असेट्स, एवरीथिंग. अगर वो एक हायर ग्रोथ रेट चूज करता है देन ही हैज टू स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ताकि मोर डिमांड एंड न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन द मार्केट. ओके, दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन. ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब when he chooses a higher growth rate, then what will happen? He will try to retain a higher proportion of total profits for the expansion of the firm because we are now aspiring for higher growth rate. कंपनी बढ़ रहा है, कंपनी अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तब मैनेजर्स क्या चाहते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट कंपनी में ही रहे, एक्सपैंड हो सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन. ओके, so profits are to be distributed to shareholders in the form of dividends and in the form of dividends. Okay, so next what will happen, the threat of takeover of the firm will loom large among the managers. तो बहुत से ऐसे कंडीशन होते हैं कि अगर हम ये सारा चीज नहीं करते हैं तो what will happen, हमारा डिविडेंड के हिसाब से हम ज्यादा प्रॉफिट दे देंगे, अगर हम डिविडेंड के हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट दे देंगे कंपनी तो ग्रो नहीं करेगा, कंपनी अगर ग्रो नहीं करेगा तो शेयर प्राइस तो डाउन होगा, and when this share prices starts getting down, so what will happen, other companies will come and take over it. Okay, so as the managers are more concerned about their job security and growth, they will choose the growth rate that maximizes the value of shares. क्योंकि उन लोगों को जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, इसीलिए वो लोग क्या चूज करेंगे, वो ऐसा ग्रोथ रेट चूज करेंगे जहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर सबसे मैक्सिमम हो, डिविडेंड्स भी सेटिस्फैक्टरी हम लोग शेयर होल्डर्स को पे कर सकते हैं, एंड टेक ओवर ऑफ द फर्म कैन बी अवॉइडेड. ओके, बट जो ओनर्स और शेयर होल्डर्स बैलेंस ग्रोथ चाहते हैं बिकॉज इट एंश्योर्स फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल. ओके, वो बोलते हैं कि ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हम हाई रिस्क हाई ग्रोथ रेट लेना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हमेशा अगर हम ओनर या फिर शेयर होल्डर जो लोग पैसा लगाए हैं कंपनी में, अगर आप उनको पूछोगे वो बोलेंगे इतना रिस्क लेके ग्रोथ रेट जाने की जरूरत नहीं है, यू गो फॉर अ बैलेंस ग्रोथ रेट. क्यों? क्योंकि उनको वो उनके दिमाग में है कि हमको एक फेयर रिटर्न ईच ईयर मिलता रहे. Thus, the goals of the manager may coincide with that of the firm, and they both try to achieve balanced growth of the firm. Okay, so this is your third objective, growth maximization. Let's move to your fourth objective. Fourth objective is your sales maximization. Now, sales अगर ज्यादा ना हो तो profit कहाँ से आएगा, growth कहाँ से आएगा, क्या होगा? So that is why it is also one of the objective of economics or of business firms. कौन दिया था? Baumol ने दिया था. Baumol had founded the sales maximization model. So he did a study on the oligopoly firms. Oligopoly मतलब जहां पे बहुत few sellers हैं, जिस इंडस्ट्री में बहुत few sellers हैं, that is known as oligopoly. So Baumol's findings of oligopoly firms in America reveal that they follow the sales maximization objective. According to Baumol, जब हम सेपरेट करवाते हैं ओनरशिप एंड कंट्रोल इन मॉडर्न कॉर्पोरेशंस, तब क्या होती है, मैनेजर्स ऑलवेज हैव अ फूड फॉर प्रेस्टीज एंड हायर सैलरीज. ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इवन एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट्स. हमारे दिमाग में क्या है कि हम अगर सेल्स बढ़ा दे तो प्रॉफिट तो जायज सी बातें आएगा, बट इन सर्टेन कंडीशंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम अगर सेल्स भी ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा. नो, देयर आर वेरियस एक्सेप्शंस टू दिस केसेस.
So we cannot directly say this. So being a consultant, बॉमल खुद ही एक consultant थे बहुत to a large number of organizations. बॉमल ने बोले कि when asked how their business went last year, the business managers often respond, हमारा सेल्स तो 3 गुना ज्यादा हो गया. ओके, सो बॉमल इसीलिए बोले, कोई बोलता नहीं है प्रॉफिट 3 गुना हो गया, नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं सेल्स बढ़ गया है. So according to Baumol, revenue or sales maximization rather than profit maximization is consistent with the actual behavior of the firm. तो अगर हम एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द फर्म को जानने की कोशिश करें, अभी कोविड टाइम पे हम क्या देखते हैं, हम देख रहे हैं कि कितना सेल्स हुआ है ना. प्रॉफिट हम अभी देख नहीं रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट मैक्सिमम फोकस इज ऑन सेल्स. Baumol says that short-term revenue maximization may be consistent with long-run profit maximization. ठीक है, आज के डेट पे आप जितना इनकम कर रहे हो वो एट लेवल और एट पार हो सकता है when we take into consideration long-run profit maximization. But sales maximization is regarded as the short-run and long-run goal of the management. क्यों हम इसको मानते हैं? Because sales maximization is not only a means but an end in itself. Okay, so this is the fourth objective of business firm. Any doubt? No, Any ma'am. doubt? Fine, आगे चलते हैं. The fifth objective is output maximization. Okay, we had seen about profit, we have seen about shareholders utility, we have seen about sales, we have seen about growth. Now it is output maximization. Now who gave this concept? Milton Kefalgis. उन्होंने सजेस्ट किया था कि आउटपुट मैक्सिमाइजेशन भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है. Why? उनके हिसाब से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस छांटने की कोशिश करें और फ्रीक्वेंटली मेजर करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आउटपुट विद रेवेन्यू, ओके, सो रेवेन्यू विल ऑकर अ सेकंड पोजीशन. फिजिकल आउटपुट अगर हमको पता चला कि हमारा आउटपुट इतना बढ़ गया है तो दिमाग में क्या चलेगा, अच्छा आउटपुट क्यों बढ़ रहा है, मार्केट में डिमांड होगा इसीलिए हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा. ओके, thus Kefalgis prefers output maximization in comparison to profit and revenue maximization as the objective of a firm. तो Kefalgis को अगर आप पूछोगे कि objective of a business firm क्या है, वो definitely बोलेंगे output maximization. He won't say profit maximization or revenue maximization. Okay, so Ma'am, अगर एक फर्म को बोला जाएगा, हाँ बोलो. ma'am, what's the difference between output and sales maximization, ma'am? Okay, sales में output में it's related to production. Okay, Production see, and okay. only production. When we are focusing on output, okay, we are focusing on production. Sales में क्या होता है, how it will come to sales? Production प्लस एडवर्टाइजिंग. सेल्स में आपका ज्यादातर एडवर्टाइजिंग आएगा, जितना ज्यादा आप एडवर्टाइज कर पाओगे उतना सेल्स होगा. सो योर आउटपुट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसीलिए बोला जा रहा है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन में मैक्सिमम इंपैक्ट और मैक्सिमम फोकस इज ऑन प्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमम फोकस इज ऑन एडवर्टाइजिंग. ओके, समझ में आया लितिका? Yes, ma'am. Okay, next, security profits. Okay, now profits has to be also secured. ऐसे नहीं कि uncertain आज होगा कल होगा, no. So Rothschild has put forward the view that the firm is motivated not only by profit maximization, मतलब आप खाली बोल दोगे profit maximization ही सब कुछ है, no, you cannot say that, but by the desire for security profits. प्रॉफिट सिक्योर होनी चाहिए, एक एश्योरेंस होनी चाहिए कि इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा.
ओके, सो रॉथशाइल्ड आर्ग्यूज, जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो इट इज ओनली वैलिड अंडर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे आइदर फर्म्स बहुत ही ज्यादा है या फिर इंडिविजुअल फर्म का कोई कंपटीशन ही नहीं है, जैसे मोनोपोली केस में। लेकिन अगर हम ओलिगोपोली केस देखें, जहां पे बहुत सेलर्स, मतलब फ्यू सेलर्स हैं एंड देयर मार्केट, लाइक ऑल द कंपनीज आर वेल सेटल्ड इन द मार्केट इंडस्ट्री, वहां पे कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज they go for a military strategist, continuously they have to achieve the market share that they have, or else आपका competitor आके लेके चला जाएगा। So the desire to increase its security leads to the struggle for position and to the setting of a price which will not be so low that it provokes retaliation from rivals, not so high that it encourages new entrants, and it must be within the range which will maintain a protection from the aggressive policies of the rivals। तो वो क्या बोल रहा है, जब आप ओलिगोपोली केस में हो, जहां पे बहुत फ्यू सेलर्स हैं, उस पे आप जब प्राइस फिक्सेशन की बात आती है, आप उसको ना ही इतना लो रख सकते हो ना ही उतना हाई रख सकते हो, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। So that is why they are saying that secured profit motive is very important rather than just profit maximization. No, only secure profit motive is very, very important. So this is also one of the objective of business firm. Okay, last objective is your satisfaction maximization. Skytos, not Sky, let us say it in this way. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला और उन्होंने फेवर किया मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब हम ऑब्जेक्टिव के फर्म के ऊपर बात करते हैं, सो ही सेड रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, satisfaction maximization is very important. वो he is mainly concerned with managerial effort and the problems that managers have for work. कोई managers को कोई जगह पे अच्छा नहीं लग रहा है, but they have to work, they have no choice. According to him, an entrepreneur would maximize profits only if his choice between more income and more leisure is independent of his income. So वो क्या बोल रहे हैं, एक entrepreneur का अगर हम देखें तो उसका profit maximum कब होगा, जब वो खुशी से काम करे between, and he will, so that is why he will earn more income. So in other words, the supply of entrepreneurship should have zero income elasticity. जब हम supply of entrepreneurship की बात कर रहे हैं, वहां पे zero income elasticity context आनी चाहिए. We will learn about this, what is elasticity of demand. But an entrepreneur कभी भी profit के ऊपर focus नहीं करता है. He always wants to maximize satisfaction and keep his efforts and outputs below the level of maximum profit. Always. So it is also an objective of business firms. Okay, any doubt in business firms, business objective? Okay, No, ma'am. fine, we will take a 1-minute break and then we will start. Okay.
Okay, so we are back. Let's start with another topic. Topic is demand analysis and law of demand. Okay, ये भी बहुत ही important topic है. हम जब डिमांड एनालिसिस की बात करते हैं या फिर लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. ओके, पहले तो हम ये देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है. वो बोल रहा है कि प्राइस एंड क्वांटिटी, चाहे आप कोई गुड ले लो चाहे आप कोई सर्विस ले लो, प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. इसका मतलब क्या है, प्राइस अगर हम बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी तो घटेगा, और अगर क्वांटिटी प्राइस अगर घटाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ेगा. ओके, सो ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस. सो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other factors being constant, ceteris paribus, price and quantity demand of any good and service are inversely related to each other. इसका मतलब क्या हुआ, when the price of a product increases, the demand for the same product will fall. Okay, so come back. Law of demand works with law of supply. हमेशा सप्लाई को मार्क करके ही हम लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट करते हैं. व्हाई? टू एक्सप्लेन हाउ मार्केट इकोनॉमीज allocate resources and determine the prices of goods and services that we observe in everyday transactions. Okay, हमेशा it works with the law of supply. The law of demand states that quantity purchased varies inversely with price. Law of demand, what does it state? It states जब कभी हम quantity purchase करने की बात करते हैं, what I said right now, it is inversely related to the price. इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा प्राइस है उतना क्वांटिटी हम लो डिमांड करेंगे. ओके, द हायर द प्राइस द लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड. क्यों? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अभी मैं आपके सामने एक कटोरी रसगुल्ला रख दूंगी, ठीक है, तीनों को दे दूंगी. आप तीनों क्या करोगे, पहले तो रसगुल्ला देके मुंह पे पानी आएगा, फिर क्या करोगे, एक साथ दो दो लेट्स से पकड़ोगे, दो दो पीसेस, है ना, 2 पीस पूरा खा लोगे, फिर मैं आपको एक पानी का ग्लास दूंगी. वंस यू ड्रैंक दैट वाटर, अगेन आई विल टेक अ कटोरी ऑफ रसगुल्ला, आई विल ब्रिंग अ बॉल ऑफ रसगुल्ला एंड आई विल गिव यू 2. जैसे तैसे करके आप खा लोगे. उसके बाद क्या होगा, 2 और 1.5 तो खा ही लोगे, फिर से आपको एक ग्लास का पानी दूंगी, फिर से क्या होगा, फिर से एक कटोरी का रसगुल्ला लेके जाऊंगी. सो व्हाट विल हैपन, नाउ you won't be in a position to eat 1 or half depending. Okay, why? क्योंकि आपका जो marginal utility था वो diminish होते होते गया. So that is the reason of, or that is the meaning of diminishing marginal utility. Okay, जितना ज्यादा प्रोडक्ट हम खाएंगे और यूज करेंगे या फिर कंजर्व करेंगे बियॉन्ड आवर रीजन और बियॉन्ड आवर रीजन, उसके बाद हमारा डिससैटिस्फैक्शन आने का बहुत चांसेस है. So this is a law of demand. Now we will talk about elasticity of demand and its measurement, the most important topic and बहुत ही difficult concept है, not difficult actually, बहुत ही tricky concept है. Okay, so I would request everyone to bring a pen and paper and sit down, because I would rather say you certain questions or give you certain questions to solve also, छोटा छोटा questions. Okay, now elasticity of demand का मतलब क्या है, हमने अभी law of demand देखा. So law of demand is related to price and quantity. What does this elasticity of demand mean? Elasticity of demand की बात हम जब करते हैं, so it measures the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in one variables affecting demand. कोई भी वेरिएबल हो सके, चाहे वो प्राइस हो सके, चाहे वो इनकम हो सके. हमको पता चला लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस एंड क्वांटिटी इनवर्सली रिलेटेड है, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कितना डिग्री चेंज हो रहा है. सपोज इनकम बढ़ गया तो कितना क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो रहा है या लेस हो रहा है,
उसका कहाँ से हमको आंसर मिलेगा? सपोज यू हैव परचेस्ड अ लग्जरी गुड्स का अगर हम देखें तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है या लेस हो रहा है? हाउ वुड वी नो एंड हाउ मच? दैट आंसर वी आर गेटिंग फ्रॉम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Law of demand states that the quantity demanded of a commodity varies inversely with the price. All other variables remain unchanged. Okay. But we want to know how much quantity demanded will change in response to a change in price. हमको ये जानना है कितना change होना चाहिए, कितना change हो सकता है when we are talking about a quantity demanded with that of price. इसी के लिए we take price elasticity of demand, which seeks to quantify the relationship between price change and quantity change. Now, methods for measuring price elasticity of demand. So first one is price elasticity. We have price elasticity, we have income elasticity, and we have cross elasticity of demand. So first one is price elasticity of demand. तो जैसे हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है? अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा? बहुत कम बढ़ेगा या बहुत ज्यादा बढ़ेगा? दैट वी डोंट नो. सो द डिग्री to which the quantity demanded of a commodity responds to a change in its own price is known as price elasticity of demand. जो degree, okay, the degree to which the quantity demanded of a commodity respond to a change in its own price is known as price elasticity of demand. अगर change in price बहुत ज्यादा change हुआ quantity demanded में, तो उसको हम बोलते हैं elastic. The demand for the commodity is said to be elastic. अगर बहुत छोटा change हुआ तो that is known as inelastic. So दो methods हैं for measuring price elasticity of demand. The two methods are, one is percentage method, one is geometric method. Now let us see what is percentage method. ये बहुत ही common method है for measuring price elasticity of demand. This method was introduced by Professor Marshall. ये method को हम flux method भी बोलते हैं या फिर mathematical method भी बोलते हैं. Elasticity of demand, we write it like this: E, capital E, D. Now, what does it say? Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, because we are seeing from the point of price now. Okay. So, elasticity of demand as per percentage method formula is percentage change in quantity demanded divided by परसेंटेज चेंज इन प्राइस. समझ में आया सबको? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Now, if I'll ask you, how would you find percentage change in quantity demanded? तो आप क्या बोलोगे? Change in quantity divided by initial quantity into 100. Change in quantity, आपको दो quantity दिया गया होगा, Q1 and Q1 minus Q. Let's say Q1 is the new quantity, Q is the original quantity. Okay, that is known as change in quantity divided by initial quantity, मतलब divided by Q into 100. Similarly, price में change in price divided by initial price into 100. Okay. Next is your proportionate method. The percentage method can also be converted into the proportionate method. This is the formula: delta Q by Q into 100 divided by delta P by P into 100. Delta Q मतलब change in quantity. Okay. Or you can say delta Q by delta P into P by Q. What is delta Q? Delta Q है change in quantity demanded. Delta P है आपका change in price. Okay. P is your initial price. Q is your initial quantity or original quantity. Okay. Just do one question based upon this and tell me the answer. Write the question. Calculate price elasticity of demand
calculate price elasticity of demand if demand increases from 4 units to 5 units due to fall in price from ₹10 to ₹8. समझ में आया क्वेश्चन? Find the answer. We have to find price elasticity of demand. Okay. So how would you find what is your original quantity here? Original quantity is 4. New quantity is, let's say Q1, 5. Similarly, original price is ₹10 and P1 is ₹8. Okay. Yes, I got an answer from Akanksha only. So what will be your price elasticity of demand? ED, D will be down. Okay. ED equals to what will you do? Change in quantity divided by change in price into price by quantity. Find out first change in quantity, right? What will you find first? Change in quantity. So what is change in quantity? Delta Q. If I write like this, delta Q is equal to 5 minus 4 divided by 4 into 100. That comes to 1 by 4 into 100. That comes to 25%, right? Or 25. Next, what is delta P? What is the difference? 2. What is the base amount? 10. So minus 2 divided by 10 into 100. So that comes to minus 20. Now put it. You will get the value of minus 1.25. This is your elasticity of demand. Clear, all of you? Any doubt? No, ma'am. Okay. Let's move to the next method. 5. This is your okay. Geometric method. Next method is your geometric method. This method was suggested by Professor Marshall and it is used to measure the elasticity at a point on the demand curve. आपको demand curve ऐसे दिया गया होगा. Okay, always remember the demand curve is always downward sloping. This is the shape of a demand curve. Let's say X and Y. This is price. Sorry, X-axis is always quantity. Y-axis is always price. Okay, always remember. So this is the demand curve.
So geometric method is actually used to measure the elasticity at a point. Suppose I'll put a point here and I'll ask that is it coming under highly elastic, highly inelastic, zero elastic? Tell me what is the answer. So a point on the demand curve, to find out the elasticity, we use geometric curve. It is also known as graphic method or profit method or arc method. Okay, it is also known as profit method, graphic method and arc method. Okay, fine. So let's move to the first category, that is your, okay, now the formula for this particular geometric method, elasticity of demand, the formula is this: ED, lower segment of demand curve divided by upper segment of demand curve, LS divided by US. Can you see the screen? Lower segment of the demand curve. Suppose I'll put a point here and I'll put a point here. So lower segment of the demand curve, this will be your lower segment, this will be your upper segment. I gave an example, upper segment of the demand curve. Okay. So let us understand the first category. First category is unitary elastic demand. Unitary elastic demand. It means ED is always equal to 1. Here ED is always equals to 1. Okay. Now the diagrammatic view is this. At the midpoint of the demand curve line, that is point B, the lower and upper segments, BD is the lower part and BE is the upper part, are exactly equal. So if you get such a diagram or such a context, you will say elasticity at point B, if there is a point on the midpoint of the demand curve. So elasticity at point B is always equal to 1. When demand is unitary elastic, a fall or rise in the price of a commodity does not change the total expenditure. This is what will come in your NET question. In which case, the price of the commodity, a fall or rise in the price of the commodity does not change the total expenditure. It will only happen in case of unitary elastic. Always remember this point. For example, let's say, suppose I'll give you an example, price P and quantity. Let's say price is 5 and 4, what we know as per law of demand, if price falls, quantity will go up 100, 125. Now what will be your total expenditure? Total expenditure will be 500. This will be also 500. Hence proved or not? What I said, if the demand is unitary elastic, a fall or rise in the price of the commodity does not change the total expenditure. Clear or not? Any doubt in this context? No, ma'am. Okay. Always remember, in this case, in the case of unitary elastic, the demand curve is a rectangular parabola. Okay. In this case, this is again one of the question, in which case the demand curve is a rectangular parabola. If you do it properly, this 5, 4, this example in a graph, you will get the shape of a rectangular parabola. Okay. Rectangular parabola. Now, what are the commodities that are having unitary elastic? Scooter, refrigerator, all these type of commodities have unitary elastic demand. Now, degree of elasticity, when percentage change
in quantity demanded is equal to percentage change in price. See, I have given you 3 cases in order to find out whether this particular example is unitary elastic or not. This you saw, fall or rise in the commodity does not change the total expenditure. Another one you saw, suppose there is a midpoint on the demand curve, that is a case of unitary elastic. Third is percentage change of quantity demanded. Now what will be the percentage change? 1 by 5 into 100, right? So that comes to how much? 20%. Similarly, this will be okay, just a minute. Okay. Here there is some problem, just a minute. Original price was 5 and we went down to 4. Original quantity is 100 and we went down to 125. Okay, in this case, there is some problem. This is not a perfect example. We have to change. I was just giving an example. Suppose I'll change the case. It will be 20 and 10. Just calculate, everyone. Is it same or not? 20 and 10. And this side it is 100 and 150. Just see whether percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price or not. 10 by 20 into 100. 20%, yes. So it depends. Now in this particular scenario, if you will see degree of elasticity, you will never say that it is a case of unitary elastic. Why? Because we had a rule, when percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be unitary elastic. So this particular example, when we consider for degree of elasticity, it is not coming under unitary elastic. But just if you see only unitary elastic demand rules, 2 rules are satisfied here. So we have to check all the 3 rules. Okay, understood or not? In order to find out whether this particular thing is coming under unitary elastic or not, you have to take into consideration 3 conditions. Only then you can say that it is a unitary elastic demand. Clear or not? Any doubt? Akanksha and Litika, do you have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Fine. So let's move to the next one. Highly elastic demand. Highly elastic means ED is greater than 1. Now in what context ED will be greater than 1? See, at every point above the midpoint, this is your midpoint B. Every point above the midpoint but below E. E is this point. So the region, this region here, the elasticity will be greater than 1. Why? Because the lower segment is greater than upper segment. Okay, so ED at point A, for example, LS equals to US. AD divided by AE is always greater than 1. If you will get such a statement, if you get such a condition, then you will say that it is highly elastic demand. For example, gold. Now, always remember, when demand is elastic, a fall in the rise of a commodity results in increase in total expenditure on it. Right? For example, this question, see, 5, 4, 100, 140. Now, what is happening? Price is falling, but total expenditure is also increasing. Okay, so that is a case, another case of highly elastic demand. On the other hand, when price increases, total expenditure decreases. Okay, when price increases, total expenditure decreases. Vice versa.
Now if it will be 5, 6, so what will happen? Total expenditure will also go down. So it's another condition. So when we check into degree of elasticity, when percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price, in that case, a commodity is said to be highly elastic. So if you will go for change in quantity demanded and change in price, in that case, if percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price, then in this case, it will be known as highly elastic demand. And what are the commodities? AC, DVD player generally have highly elastic demand. Clear or not? Any doubt? No, ma'am. Next is less elastic demand, just opposite. So what will happen? At any point in between midpoint and D, that is between B and D, the elasticity will be always less than 1. It happens because lower segment is less than the upper segment. Why? CD divided by CE. It is always less than 1. So whenever such a case happens, inelastic case comes, a fall in the price of a commodity, see here, fall in the price of a commodity results in fall of total expenditure. इन द लास्ट केस क्या हो रहा था? पिछले केस में क्या हो रहा था? अगर प्राइस घट रहा था तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर प्राइस घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है. अगर आपको कहीं पे भी ऐसा सिचुएशन मिला तो आप जानोगे इट इज अ केस ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड. अनदर पॉइंट हाउ यू विल नो? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा लेस होगा in comparison to change in price. So in that case also we will call it to be less elastic or inelastic. आपके vegetables ज्यादातर आते हैं less elastic demand के अंडर. Understood this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is your, these are imaginary situations. अभी जो हम दो पढ़ने वाले हैं ये pure imaginary situation है. ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा बहुत हुआ ही नहीं है. Imaginary situation. एक है perfectly elastic demand. Now what is perfectly elastic demand? At any point on the y-axis, यहाँ पे हम point E दिए हैं. Elasticity is equal to infinity. Because at this point there is no upper segment. Upper segment कुछ है नहीं है. So इसको हम बोलते हैं infinity. So whenever there is an infinite demand at a particular price and demand becomes 0, बहुत ज्यादा demand है एक particular price में, but demand 0 हो जाता है with a slight use in the slight vary in the price, तब उस केस में हम demand को perfectly elastic बोलेंगे. ये imaginary situation है. ओके एक तरफा वो बोल रहा है कि मानो 10 रुपए में बहुत ज्यादा प्राइस है एंड 10 रुपए से अगर आप 9.5 और 9.9 कर लेते हो या 10.1 कर लेते हो, हटाक से अचानक से पूरा का पूरा डिमांड आपका 0 हो जाता है. ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट? सो इन दैट केस इट इज अ केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक. व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड? ईडी इक्वल्स टू 0. तो वो क्या बोल रहे हैं? एट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जैसे आपने देखा यहाँ पे पॉइंट डी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई लोअर सेगमेंट है ही नहीं है. So whenever there is a change, there is no change in demand with change in price. Price 10, 20, 30, 40 बढ़े या घटे, आपका डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा. This is also practically not possible. So in this case, demand is said to be perfectly inelastic. समझ में आया सबको? So this is the summary I have given. Perfectly elastic, ED equals to infinity, infinite demand at same price. Perfectly inelastic, ED equals to 0. Same demand at all prices. Highly inelastic, highly elastic,
ED greater than 1 मतलब percentage change in demand divided by percentage change in price. Less elastic मतलब ED is less than 1 मतलब percentage change in demand divided by percentage change in price. Unitary elastic मतलब ED equals to 1 percentage change in demand equals to percentage change in price. समझ में आया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आप कोई भी मेथड ले लो, चाहे प्राइस हो, चाहे इनकम हो, चाहे आपका क्रॉस इलास्टिसिटी हो, these are the things that you are like, this is same, perfectly elastic, inelastic, highly elastic, less elastic, unitary elastic, ये सारे same हैं. Okay, price elasticity of demand को हम total expenditure method में भी calculate कर सकते हैं. It is also known as total outlay or total revenue method. Price elasticity of demand को हम और else total outlay method भी बोल सकते हैं, total revenue method भी बोल सकते हैं. Highly elastic क्यों है? देखो highly elastic किस condition में आएगा? ED is greater than 1 अगर TE is inversely related to price. ये हमने अभी पढ़ा, वही सेम चीज वो बोल रहे हैं. लेस इलास्टिक कब होगा? जब टोटल एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस, राइट? अगर प्राइस घट रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है. अगर प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है. एंड यूनिटरी इलास्टिक, अगर टोटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल चेंज ही नहीं होता है, चाहे प्राइस में कितना भी चेंजेस हो. तो ये तीनों चीजें ही आप टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल रेवेन्यू मेथड से जान सकते हो. Okay, fine. So, okay. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो इनकम हमने प्राइस पढ़ा. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से क्वांटिटी कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, क्वांटिटी डिमांड, दैट वी आर ट्राइंग टू मेजर फ्रॉम प्राइस इलास्टिसिटी. सेम इन दैट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी. अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मेरा क्वांटिटी डिमांड घट रहा है या बढ़ रहा है, दैट ओनली वी आर ट्राइंग टू फाइंड. द फॉर्मूला इज हियर. Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. ज्यादा, the higher the income elasticity of demand, the more responsive it becomes the change in consumers income. अगर ज्यादा income elasticity में high elasticity हुआ तो इसका मतलब क्या है? consumer income में भी बहुत ज्यादा change है. अगर income elasticity, income is denoted by Y, अगर इनकम मोर देन 0 है, प्रोडक्ट आपका इनकम इलास्टिक है. नॉर्मल गुड्स हैव पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट आपका द इनकम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, डेली गुड्स, इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, जो कि आपके बेसिक नीड्स हैं, मिल्क, फ्यूल, मेडिसिन. लग्जरीज आर आल्सो इनकम इलास्टिक. एग्जांपल्स ऑफ लग्जरी गुड्स आर हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी. फॉर एग्जांपल, इफ अ कंज्यूमर income increases, he may invest or purchase a high end mobile or a HD television. But आपके जो inferior goods हैं, जो मार्केट पे उसका और ज्यादा डिमांड अभी है नहीं, सो उस केसेस में उन लोगों के पास नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है. इसका मतलब क्या है? आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 0. इफ द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, दे डिमांड लेस ऑफ दीज गुड्स. Inferior goods are called inferior because they usually have superior alternatives. Okay, this is what about income elasticity. But income elasticity में भी वही सेम चीज है. आपका इलास्टिसिटी का पूरा सारा कॉन्सेप्ट जो आपने अभी पढ़ा, हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस इलास्टिक, सब कुछ है वहां पे. The next is your cross elasticity of demand. Now, what does this cross elasticity of demand mean? Cross elasticity of a demand is the responsiveness of demand for a product in relation to the change in the price of another product. अभी क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड नहीं आ रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट के हिसाब से अभी चल रहा है. सपोज
मैं जानना चाहती हूँ चावल have no effect on demand for chocolates. Okay, if I want to find out an increase in the price of pulses have no effect on the demand for chocolate, यहाँ पे मैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूज करूंगी. What will I do? I will go for finding out change in demand for one product divided by percentage of change in the price of another product. Okay. So cross elasticity of demand is equal to percentage change in the demand for product A divided by percentage change in the price of product B. एक का डिमांड दूसरे के प्राइस के साथ, उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So the most important concept to understand in terms of cross elasticity is the type of related product. यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. समझ में आया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कोई डाउट है? No, Okay. ma'am. So a question related to this: to determine whether two goods are substitutes or complements, an economist would estimate what? To determine whether two goods are substitutes or complements, an economist would estimate price elasticity, income elasticity, cross elasticity, or is it point elasticity of demand? Okay. Ritika, please answer. Cross elasticity. Yes, it is cross elasticity of demand. Yep. Now see, now we just discussed that, right? Next, which one of the following is not a factor of production? Which one of the following is not a factor of production? Is it land, labor, money, capital? All of these are factors of production. What is it? Okay, Litika, you can give your answer in chat. Okay, C. Okay, the answer is C. Why? Land, labor, capital, and machinery. Okay, so these are the factors of production. A perfectly competitive market has firms set their own prices, only one seller, at least a few sellers, many buyers and sellers. We are talking about a perfectly competitive market. Okay, Akanksha. Yes, absolutely correct. A perfectly competitive market has many buyers and sellers. Clear. An inferior good is one for which an increase in income causes decrease in supply, increase in demand, increase in supply, and decrease in demand. What is it? An inferior good is one for which an increase in income causes okay, Akanksha. Yes, Litika, try to answer this question. Litika, your answer. Just now we discussed. Inferior good है, चाहे इनकम बढ़े तब भी हमारा डिमांड तो बढ़ेगा नहीं ना,
Because it's a case of inferior goods. We are talking here about inferior goods. So the answer is D. Which of the following is not a feature of monopolistic competition? Monopolistic. Single. Right? Monopoly. Which of the following is not a feature of monopolistic competition? Homogeneous products, large number of sellers, selling cost, product differentiation. Okay, Akanksha. I'm talking about monopolistic. Not monopoly. Don't get confused. I'm not talking about monopoly. It's monopolistic. Many. So we are here about homogeneous products. Okay. Sixth question. The price elasticity of demand is defined as the responsiveness of, just now we discussed this, responsiveness of price to a change in quantity demanded, quantity demanded to a change in price to a change in income, quantity demanded to a change in income. Okay, Akanksha. Ritika, try to recall the formula of price elasticity of demand. Yes, absolutely correct. Quantity demanded divided by change in price. Okay, fine. So we will stop here today because it's very late now. Okay, and tomorrow again we will continue. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Any questions? No, ma'am. No, ma'am. Okay, just a minute. Thank you, all of you, and good night. Good night, ma'am.